It's a mega news day here at Republic TV, viewers. This is your election headquarters. We are getting you the pulse of the nation, the exclusive inputs, the voices that matter. Remember, today is the first day, it's the first phase of polling, and Republic TV has lined up all our reporters from the length and breadth of the country to get you the very latest. Deepak, we have some exclusive inputs also lined up. Right, Rakshita, we have an exclusive input of a very prominent leader, Anil Baloni, the BJP candidate from the Garhwal constituency. Let's play that out for our viewers. आपने कहा पहले मतदान उसके बाद जलपान। खाने में मडुए की रोटी है, आलू के गुटके हैं और धनिये की चटनी है। खाने में तो बहुत स्वाद है, लेकिन यहाँ जब रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, तो इतना ही स्वाद आने वाला है क्या? देखिए, इससे भी ज़्यादा स्वाद आने वाला है। आप निश्चित मान के चलिए, जो आबो हवा आप देख रहे हैं, अगर आप लोगों से पूछेंगे, मेरे बूथ पे 40% से ऊपर मतदान हो चुका है 9:30 बजे। सोचिए कि कितना उत्साह लोगों के अंदर, कितना भारी मतदान हो रहा है, और ये भारी मतदान मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है। सर, अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है आप यहाँ से? जीत को लेकर आश्वस्त नहीं, अभी तो ये कि 5 लाख पार होगा, इसको लेकर भी आश्वस्त। सर, इसके साथ एक बात और समझना चाहेंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू देखा 100 दिनों के कामकाज का, उन्होंने रोड मैप भी तैयार कर लिया। तो क्या अनिल बलूनी जी ने भी ऐसा कोई रोड मैप तैयार किया है पहाड़ के लोगों के लिए? कहा कि पलायन के खिलाफ लड़ाई युद्ध शुरू करेंगे। आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख से काम शुरू कर देंगे। पलायन आयोग भी आपकी सरकार में ही बनाया गया था 2017 में, लेकिन क्या अब उस पे और आगे काम होने वाला है, क्योंकि पलायन की समस्याएं कम नहीं हुई है? मेरा एक तरीका है काम करने का, मैंने पलायन के लिए पहले भी काम किया, पलायन रोकने के लिए, उसको और तेज करने वाला हूँ। सर, इसके अलावा और कौन से मुद्दे होंगे जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आप सुलझाते हुए नजर आएंगे लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए? देखिए, एक फॉरेस्ट का इशू बहुत बड़ा है। जंगलात से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, जंगल के विषय को कैसे जोड़ा जाए। जंगल जो है वो लोगों के जीवन में बाधा न बन के उनके साथ बढ़े, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम आगे जाके पूरा करेंगे। सर, इस बार कितने पार? हमने लक्ष्य बनाया था 500 पार का, तो 5 लाख पार का, तो 5 लाख पार करेंगे। Now viewers, we are getting you in fact back-to-back mega exclusive. This time we are going to tell you what Sachin Pilot has to say. This is a Republic TV exclusive. Take a listen in to Congress's Sachin Pilot. The mood is upbeat. The Congress party candidates will do very well in this election. This election is an election of change. People want answers for the non-performance of last 10 years. And mere propaganda and publicity will not fetch votes. People want delivery. Therefore, I'm confident the Congress party will do extremely well in Rajasthan and in other parts of the country also. One more thing, Mr. Pilot. It was being said that the two leaders whom to listen, the public actually gathered. One was PM's address, another was Sachin Pilot, especially when we saw you in Junjunu, Dausa, Tong, Savai Madhavpur and several places. What do you think? This will convert into voters? This will Congress? How many seats are you confident of? I think we will get more seats in the BJP. Last time we were not able to win any seats at all. There's a big change this time, and we can only request the voters. Ultimately, they will decide who to vote for. But I'm confident that on June 4th, when the results come out, India Alliance will be able to form the government. 2014, 2019, BJP backed all the seats. This time, what different narrative exactly Congress has set, which is making you so hopeful and confident of at least getting 4 to 5 or 10 seats? We have put out an agenda, the guarantees for young people, for farmers, for women. All these people they have not been brought into the mainstream. I think the economic policies of the government have created a big difference between the rich and the poor. That's a matter of concern. And the continuous weakening of the constitutional institutions in this country is also a big issue. Muzzling the voice of the opposition, not allowing the Congress party to function, seizing of a bank accounts, all these things are also playing in people's minds. And I think this time people are going to vote for a change. One last question. Do you still believe that there's a Modi factor, or what you have been iterating in your every campaign, that people are going to vote for change that will work this time, or the inflation and unemployment? I don't see any wave for any issue. I think people will vote on things that matter to them. Every state has a different political setup, but the alliance itself will get majority.